Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Chanda Vallabha Giridharadhari Gopi Chanda Vallabha Giridharadhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Chanda Vallabha Giridharadhari Gopi Chanda Vallabha Giridharadhari Yashoda Nandana Braja Jana Yashoda Nandana Braja Jana Yamuna Tira Banachari Yamuna Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Chanda Vallabha Giridharadhari Gopi Chanda Vallabha Giridharadhari Yashoda Nandana Braja Jana Yashoda Nandana Braja Jana Yashoda Yamuna Tira Banachari Yamuna Yamuna Tira Banachari Yamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jai Nitya Vishnu Vishnupad Paramahansa Shri Vrajacharya Astotar Shri Srimad Bhagavatam Charan Vinda Bhakti Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON BBD Foundation save the whole world Srila Prabhupada Ki Jai Nitya Vishnu Vishnupad Paramahansa
Parivrajakacharya Stotara Shri Srimad Bhagavatam Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaja ki Ananta Koti Vaishnavindi ki Namacharya Sharadas Thakur ki Premjagaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Radha Bhaktivinoda ki Shri Radha Krishna Gopavana Shamakund Radha Kund Giri Govardhana ki Braj Bhumi Shri Vrindavan ki Navadip Mayapur Dham ki Purushottam Chatra Jagadipuyam ki Ganga Mai ki Jamuna Mai ki Bhakti Devi ki Tulasi Maharani ki Samaveta Bhaktivinoda ki Jai Nitai Go Premanandi. All glories to somebodies, all glories to somebodies, all glories to somebodies, all glories to somebodies, glories to Shri Guru and Shri Guru, all glories to the Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, so we're reading text 63 and 64. Boja Vrishni Andaka Madhu Boja Vrishni Andaka Madhu Boja Vrishni Andaka Madhu Surasena Tashahakai Surasena Tashahakai Surasena Tashahakai Boja Vishyandaka Madhu Surasena Tashahakai Svakaniyahita Shashvat Slakaniyahita Shashvat Slakaniyahita Shashvat Kuru Shinjaya Pandubi Kuru Shinjaya Pandubi Kuru Shinjaya Pandubi Slaganiyahita Shashvat Kuru Shinjaya Pandubi Snigdha Smitekshito Darai Snigdha Smitekshito Darai Snigdha Smitekshito Darai Vakyai Vikrama Lilaya Vakyai Vikrama Lilaya Vakyai Vikrama Lilaya Snigdha Smitekshito Dara Vakyai Vikrama Lilaya Rilokam Ramayam Asa Rilokam Ramayam Asa Rilokam Ramayam Asa Murtya Sarvanga Ramyaya Murtya Sarvanga Ramyaya Murtya Sarvanga Ramyaya Rilokam Ramayam Asa Murtya Sarvanga Ramyaya Boja Vishyandaka Madhu Surasena Tashahakai Svaghaniye Hita Shashvat
Guru Shinjaya Pandubi Snigdha Smitekshito Dharaya Vakyai Vikramalilaya Mrilokam Ramayam Asa Murtya Sarangaram Yaya Boja Vishandaka Madhu Surasena Dasahakai Slaganiye Hita Shasvat Guru Shinjaya Pandubi Snigdha Smitek Shitodhara Vakyai Vikramalilaya Mrilokam Ramayam Asa Murtya Savangaram Yaya Okay, you'll try. I just want to give you a brief introduction which I have. No, you don't need to do that. This is Bhagavatam class, not Nrisimha Kavach class. Okay. Bhagavatam. Just stick to that. They don't need to know. Vaishnavis? Bhoja, assisted by the Bhoja dynasty. I have it. Should I read it? So what do you want to do? What's the easiest way for you? How do you want to do it? Word for meaning is you can read only. And Yeah. the translation purport. Okay, no worries. Vrishni, and by the Vrishnis. Andaka, and by the Andakas. Madhu, and by the Madhus. Shurasena, and by the Shurasenas. Dashahakai, and by the Dashahakas. Shlaghaniya, by the praiseworthy. Ihita, endeavoring.
Shashvat, always. Kuru Shinjaya Pandubi, assisted by the Pandavas, Kurus and Shinjayas. Snigdha, affectionate. Smita, smiling. Ikshita, being regarded as. Udarai, magnanimous. Vakyai, the instructions. Vikramalilaya, the pastimes of heroism. Nrilokam, human society. Ramayam asa, pleased. Murtya, by his personal form. Sarva Angaramyaya, the form that pleases everyone by all parts of the body. Translation. Assisted by the descendants of the Bhoja, Vrishni, Andaka, Madhu, Shurasena, Dasarha, Kuru, Srinjai, and Pandu, Lord Krishna performed various activities. By his pleasing smiles, his affectionate behavior, his instructions, and his uncommon pastimes like raising Govardhan Hill, the Lord appearing in his transcendental body pleased all of human society. तथा पांडवों के वंशजों की सहायता से विविध कार्यकलाप संपन्न किए। अपनी मोहक मुस्कान, अपने स्नेहिल आचरण, अपने उपदेशों और गोवर्धन पर्वत धारण करने जैसी अलौकिक लीलाओं के द्वारा भगवान ने अपने दिव्य शरीर में प्रकट होकर सारे मानव समाज को प्रमोदित किया। Purport. The words Nrilokam Ramayam Asamritya Savangaramyaya are significant. Krishna is the original form. Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, is therefore described here by the word Murtya. The word Murti means form. Krishna, or God, is never impersonal. The impersonal feature is but a manifestation of his transcendental body. Yasha Prabha Prabhavato Jagadandakoti. The Lord is Narakriti, exactly resembling the form of a human being, but his form is different from ours. Therefore, the word Savanga Ramyaya informs us that every part of his body is pleasing for everyone to see. Apart from his smiling face, every part of his body, his hands, his legs, his chest, is pleasing to the devotees, who cannot at any time stop seeing the beautiful form of the Lord. कृष्ण आदि रूप हैं, अतः भगवान को यहाँ पर मूर्त्या शब्द से बदलाया गया है। मूर्ति का अर्थ है रूप। कृष्ण या ईश्वर कभी निराकार नहीं होते। निराकार स्वरूप तो उनके दिव्य शरीर की अभिव्यक्ति है। यस्य प्रभावतो जगदंत कोटि। भगवान नरापति हैं, मनुष्य के स्वरूप से ठीक मिलते जुलते, किंतु उनका स्वरूप हमसे भिन्न होता है। अतः सर्वांग रम्या शब्द बतलाते हैं कि उनके शरीर का अंग प्रत्यंग देखने में सभी को मनोहर लगता है। उनके हंसते हुए मुख के अतिरिक्त उनके शरीर का हर अंग, उनके हाथ, उनके पांव, उनकी छाती भक्तों को मनोहर लगने वाले, जो भगवान के सुंदर रूप को देखते हुए कभी भी टकटकी नहीं लगा सकते। Omikrantimirandasya Karanjana Shalakaya Chaksarumitam Jaina Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Marobhistam Stapitam Jaina Bhutmai Swayam Rupadavayam Pidatis Bhakti. Here we see in these last few verses of the 9th canto the appearance and the activities of Krishna being described.
यहाँ पे हम देखते हैं स्कंद के आखिरी अध्याय के पिछले कुछ श्लोकों में तो भगवान कृष्ण की लीलाओं उनके कार्यकलापों का वर्णन हुआ है। Starting from about verse 56. तो ये आरंभ हुआ है 56 नंबर श्लोक से through till the end of the chapter, verse 67. और आखिरी श्लोक जो है 67 वहां तक ही चला है। And they're done in a very quick way. और बहुत जल्दी जल्दी इसको बताया गया है। But this is like, this last section here is like a prelude to the 10th canto. लेकिन ये जो थोड़े श्लोक हैं ये एक तरह 10वें स्कंद की एक भूमिका है। And as we know, the Acharyas describe the Bhagavatam as a progression from the lotus feet to the smiling face of the Lord. और हम जानते हैं जैसे कि आचार्य बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम है भगवान के चरण कमलों से शुरू होकर उनके मनमोहक मुस्कान वाले मुख कमल तक एक क्रमिक विकास है। And especially important is the 10th canto, the smiling face of the Lord. और विशेष रूप से महत्वपूर्ण है 10वां स्कंद जो कि भगवान का मुस्कुराता हुआ मुख कमल है। Which, as we see, it's being described here, how by his pleasing smiles, his affectionate behavior, his instructions, and his uncommon pastimes, the Lord is pleasing everyone. तो हम यहाँ भी वही देखते हैं कि अपनी मोहक मुस्कान, अपने स्नेहिल आचरण, अपने उपदेशों और अपनी अलौकिक लीलाओं के द्वारा भगवान सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। And this verse begins by describing, verse 63 begins by listing all the devotees that he was having exchange with. और ये जो 63वां श्लोक है ये बताता है कि वो कौन कौन से भक्त जिनका भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। The Boljas, the Vrishnis, the Andhakas, the Surasens, the Dasaras, all these different personalities, these intimate associates of Krishna, are experiencing this affectionate behavior of Krishna. तो यहाँ बोझ, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन, दशहरा ये सब भगवान के अंतरंग पार्षद हैं और भगवान के साथ लीलाओं के आदान प्रदान में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। And I think it's in the beginning of the 3rd canto. It talks about the Uddhava meeting. तो मुझे इतना ध्यान है 3रे स्कंद के शुरू में उद्धव और विदुर और उद्धव की मीटिंग का वर्णन है। And Uddhava, he actually saw Krishna just as he was about to depart from this world. उद्धव ने कृष्ण के दर्शन उस समय भी किए जब वो बस इस धाम से जाने ही वाले थे कृष्ण। And Uddhava was the final person that Krishna spoke to before leaving this world. और उद्धव वो आखिरी व्यक्ति थे जिनसे कृष्ण ने बात की इस जगत से प्रस्थान करने के पूर्व। And so he gave Uddhava various instructions. और इस कारण भगवान ने उद्धव को बहुत सारे उपदेश दिए हैं। And he also requested him to speak to Vidura. और विदुर से भी व्यक्तिगत रूप से बात की। So we see that Uddhava, he was actually quite overwhelmed by, when Vidura approached him and Vidura was asking him various things, he became, he started to remember Krishna's pastimes and became overwhelmed and he couldn't speak anymore. तो हम देखते हैं कि उद्धव जो है वो बहुत ही भाव विभोर हो गए जब विदुर उनके पास आए। विदुर ने बहुत सारे प्रश्न किए तो उद्धव को उससे कृष्ण की स्मृति और ज़्यादा तीव्र हो गई और इतना भाव विभोर हो गए कि वो उत्तर ही नहीं दे पा रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। Because Krishna, obviously there's many purposes behind Krishna's performing various pastimes. जब कृष्ण आते हैं तो उनकी लीलाएं होती हैं, उनके पीछे उनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। But one of the primary purposes is to deepen the devotee's attraction to Krishna. लेकिन जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भक्तों का भगवान के प्रति आकर्षण को बढ़ाना, इसलिए कृष्ण आते हैं। Every year during Kartik we sing this song Damodarastaka every day. हम देखते हैं कि हर साल कार्तिक महीने में हम प्रतिदिन दामोदर अष्टकम प्रार्थना गाते हैं। And this song talks about these childhood pastimes of Krishna and how the devotees are so attracted to these childhood pastimes. तो इस गीत में भगवान की जो बचपन की लीला है उसका वर्णन है। हम देखते हैं भक्त लोग कैसे आकर्षित होते हैं भगवान की इस लीला से, दामोदर लीला से। These very sweet pastimes are just
churning the devotee's affection towards Krishna. तो ये जो मधुर मधुर जो लीलाएं हैं ये भक्तों के स्नेह को बढ़ा देती हैं भगवान के प्रति। And so it gets to the point that the devotees cannot help but think of Krishna. और धीरे धीरे ये लीलाएं जो हैं इतना इतना स्मृति को बढ़ा देती हैं भगवान के प्रति कि भक्त भगवान के चिंतन के अलावा और कोई चिंतन ही नहीं कर पाता है। And there are many descriptions of the residents of Vrindavan, how they are constantly engaged in thinking about Krishna. और इस तरह बहुत सारे वर्णन हैं वृंदावन वासियों के कि किस तरह वे निरंतर कृष्ण के स्मरण में ही तल्लीन रहते हैं। Mother Yasoda, she's performing all her activities for Krishna's pleasure. तो हम देखते हैं कि सारे कार्य करने के पहले वो कृष्ण के ही स्मरण करते हैं। Every day, Nanda Maharaj, he goes out with the cows. And Mother Yasoda, he's saying, please take the cows to this place here. I've heard there's a particularly sweet grass there. And if the cows eat this grass, the milk will be sweet. And then the butter and the yogurt I make will be sweet for Krishna's pleasure. नंद महाराज जो हैं जब गायें चराने जाते हैं यशोदा मैया बोलती हैं कि गायों को उस चारागाह में ले जाना, वहाँ पे घास बहुत अच्छी है, अच्छी घास खाएंगे, अच्छा दूध होगा, अच्छा मक्खन निकलेगा, तो कृष्ण उसे खा के प्रसन्न होंगे। तो कृष्ण का ही चिंतन है सारे कार्यों में। Or you know, they may go and eat some particular types of, the cows may eat particular types of herbs which will give the milk a nice flavor. या फिर गायों को विशेष तरह की कोई दवा वगैरह दीजिए या फसल में, जिससे कि क्या है कि जो दूध है वो एक विशेष सुगंध प्राप्त करे। And then when she's churning the milk, she's singing songs glorifying Krishna's pastimes. और जब दूध का मथ रही हैं तो उस समय भी ऐसे गीत गा रही यशोदा मैया जिनमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। So all day she's simply engaged in remembering her son, Krishna. दिन भर बस उनका एक ही कार्य में लगी हैं, वो कृष्ण की सेवा में और कृष्ण के चिंतन में। And the same is there for all the residents of Vrindavan. They're always engaged in thinking of Krishna, glorifying his pastimes and engaging in pastimes with him. और ये केवल उनका ही नहीं, ये वृंदावन सही वासियों के लिए हैं कि वे सभी के सभी कृष्ण की महिमा गाने में और कृष्ण की सेवा में ही युक्त हैं दिन भर। So 24 hours a day they're engaged in Krishna conscious activities. तो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में 24 घंटे ही वो लगे हुए हैं। But they are never satisfied. लेकिन फिर भी वो कभी संतुष्ट नहीं होते। And this is the true nature, or this is the nature of spiritual activities. Is even though you're engaged in this blissful consciousness of remembering Krishna and serving Krishna, one is never satisfied. तो आध्यात्मिक गतिविधियों का यही तो गुण है कि आप जो है इसमें कृष्ण संतुष्ट करने में, कृष्ण चिंतन में लगते हैं, कभी भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी और करने की इच्छा होगी। But this is very different from what goes on in this material world. लेकिन भौतिक जगत में इसकी विपरीत ही है। Because the materialists, they're engaging in their activities and also they're never satisfied. क्योंकि भौतिकतावादी भी अपने कार्यों में लगते हैं और वो भी कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। They want more and more and more and more. उनको और ज़्यादा आवश्यक चाहिए। You see, like a wealthy person may have so much money, हम देखते हैं धनी व्यक्ति के पास बहुत पैसा होता है, more money than they can ever spend. इतना पैसा जितना वो खर्च भी नहीं कर पाते। I mean, some of these people have got hundreds of billions of dollars. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं। And how can you spend that? तो कैसे खर्च करेंगे इतना पैसा? But still, they want more. लेकिन फिर भी उन्हें और चाहिए And more and more. और चाहिए। And they're never satisfied. कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। They're never satiated. They're never satiated. कभी संतुष्टि को प्राप्त नहीं करते हैं। But we see that even though Yasodamaya and Nanda Baba and the Gopis and the Gopas, they're also in this position where they're not satisfied. They are also satisfied. तो हम देखते हैं कि नंद मैया, यशोदा, गोपियाँ वो भी ऐसी स्थिति में है कि वो संतुष्ट नहीं होते, लेकिन फिर वो संतुष्ट भी हैं। Prabhupada calls this philosophy of Krishna consciousness a perfect philosophy because it's chinta beta beta tattva. Simultaneously, you're satisfied, but you're not. तो श्रील प्रभुपाद महाराज इस कृष्ण वालों सिद्धांत को बताते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व, मतलब एक साथ वो संतुष्ट भी हैं लेकिन साथ में असंतुष्ट भी हैं। You're satisfied because you're engaging in service with Krishna, to Krishna. संतुष्ट इसलिए हैं कि वो कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। But the service is so blissful, it's so wonderful, you want more.
लेकिन ये सेवा में आनंद इतना मिल रहा है कि वो चाहते हैं कि और सेवा हम करें। And we see the devotees are always trying to serve Krishna more and more. और हम देखते हैं कि भक्त लोग की मनोभाव होता है कि कृष्ण की सेवा और ज्यादा हम कैसे करें। They're trying to surrender to Krishna more and more. कृष्ण की सेवा और अधिक करना चाहते हैं। And Krishna, he describes this in the Gita. He says, always chanting my glories, endeavoring with great determination and bowing down before me. तो यह कृष्ण भगवान बताते हैं कि हमेशा मेरी महिमा गाते हुए और बहुत प्रयास करते हुए भक्त लोग मेरी सेवा में युक्त होते हैं। And he says that the devotees, they derive great satisfaction and bliss by always enlightening one another and conversing about me. और ये बताते हैं कि मेरे बारे में एक दूसरे से बातें करते हुए भक्त लोग जो हैं दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, एक दूसरे को दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। So you see, Krishna, he's saying there that they derive satisfaction, they're satisfied. तो यहाँ पे जो कृष्ण बोल रहे हैं कि इतने सारे जो निवासी हैं ये संतुष्ट हुए। But the satisfaction is such that the devotees always want more. लेकिन ये संतुष्टि का इस तरह आनंद होता है कि भक्त लोग और आनंद के लिए और संतुष्टि चाहते हैं। This is not like the materialists who are hankering for more and more and they're never satisfied. ये भौतिकतावादी की तरह नहीं है जो कि और अधिक लालसा तृष्णा भरी हुई है उनके अंदर, कभी संतुष्टि नहीं होते हैं। So we can see there's such a contrast between the devotee and the non-devotee. यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है एक भक्त और एक अभक्त का। Because no matter how much they endeavor, the materialists will never find satisfaction in the material nature. क्योंकि कोई कितना भी प्रयास क्यों न करे, भौतिकवादी व्यक्ति अपने भौतिक प्रयासों में कभी भी संतुष्टि प्राप्त कर ही नहीं सकता। But why is that? ऐसा क्यों? It's because this is not our natural place. ऐसा इसलिए कि ये हमारी स्वाभाविक जगह ही नहीं है, ये भौतिक जगत। This is not where we belong. हम यहाँ के हैं ही। We'll never find satisfaction because we're always looking for something better. हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे यहाँ, क्योंकि हम हमेशा ही कुछ अच्छा ढूंढते रहते हैं। We're always looking for our natural connection with Krishna. We're always trying to understand who we really are and how we are properly situated, how to be properly situated. हम हमेशा कृष्ण के साथ जो स्वाभाविक संबंध है हमारा, उसकी खोज में रहते हैं। हम हमेशा यही चिंतन है कि हम कौन हैं और कैसे मैं सही स्थिति में स्थित हूँ, यही लोग चिंतन करते हैं। And we find that in this material world, people are always looking for satisfaction, always looking to be happy, but they never achieve it because they don't know how to achieve it. हम देखते हैं भौतिक जगत में लोग हमेशा चाहते हैं कि हम संतुष्ट रहें, हम खुशी की खोज में हैं, लेकिन कभी उनको खुशी मिलती नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं वो तरीका खुशी मिलेगी कैसे। And this is why the process of bhakti is so wonderful, and this is why the process of bhakti is so important. इसलिए ही जो है ये भक्ति की विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अद्भुत है। Because only through the process of bhakti can you understand who you are. क्योंकि भक्ति की विधि के द्वारा आप समझ पाएंगे कि आप हैं कौन। Only through the process of bhakti can you understand what is your true position. भक्ति विधि से आप समझ सकते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है अपनी। And only through the process of bhakti can you really understand how to be satisfied in this material world. और भक्ति विधि के द्वारा आप समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत में संतुष्ट कैसे रहा जाए। In the second chapter of the second canto, it's called The Lord in the Heart. दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय, इसका शीर्षक है हृदय में भगवान की अनुभूति। And it describes the progression of meditation from the lotus feet to the lotus face of the Lord. और इसमें बताया है कि भगवान के चरण कमलों पे ध्यान करते हुए कैसे कैसे भगवान के मुख कमल तक ध्यान की अवस्था तक आया जाए। And so it's describing how as the living entity becomes purified of the material attachments and they're able to progress from meditating on the lotus feet to meditating on the thighs, the calves, and the calves, the thighs, the hips, the waist, etc., going up to the face. और इसमें बताया है कि कैसे भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर भगवान के चरण कमल, फिर भगवान की जांघें, भगवान की नाभि, भगवान के जो वक्षस्थल और भगवान का जो है मुख कमल तक कैसे ध्यान की अवस्था में आगे बढ़ा जाए। And as we progress in bhakti, as we progress in our meditation, the material desires are diminishing. और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं, भौतिक इच्छाएं नष्ट होती चली जाती हैं। And naturally, as we become more and more attached to Krishna, then Prabhupada describes
that material desires and Krishna consciousness go ill together. जैसे जैसे कृष्ण में हमारी आसक्ति बढ़ती जाएगी, प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत और भौतिक जीवन एक साथ नहीं चलते हैं। So the more we become Krishna conscious, the more our material desires diminish. जितना हम कृष्ण भावना भावित होते चले जाएंगे, उतनी हमारी भौतिक इच्छाएं कम होती चली जाएंगी। But conversely, the stronger our material desires, the less we become attached to Krishna. इसके उल्टा कहें तो जितनी भौतिक इच्छाएं ज्यादा हैं हमारे अंदर या तीव्र हैं, उतना ही कम कृष्ण के प्रति आसक्ति होगी। So the more, if one is keen to advance more and more in Krishna consciousness, keen to diminish material desires, then we have to apply ourselves more vigorously to the process of bhakti. तो यदि कोई भौतिक इच्छाओं को कम करना चाहता है और भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा है, तो उसे भक्ति में सेवाओं में और अधिक से अधिक अपने आप को युक्त करना चाहिए। And this is called anartha nivritti. और इसे ही कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। And we see as we apply ourselves to the process of anartha nivritti, the proof that our application is effective is that material desires diminish. जैसे ही हम भक्ति में स्वयं अपने को लगाते हैं, तो इसका क्या प्रमाण है कि इसका प्रभाव हो रहा है हमारी भक्ति का, कि हमारी भौतिक इच्छाएं कम होती जाएंगी। We see that Srila Prabhupada would often call it the science of devotional service. हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद कई बार कहते थे कि भक्ति में सेवा का विज्ञान इसको बताते थे। Because as with any science, if you apply, a particular circumstance to a particular situation, then you'll get a particular result. तो क्योंकि भक्ति में से भक्ति क्या है? विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ क्या है? एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष विधि आप लगाएंगे तो वही विशेष परिणाम आना चाहिए उसमें से। I remember at school doing scientific experiments, and there'd always be, you'd have a certain temperature, a certain pressure, and you do this certain thing to these chemicals, and you get this reaction. तो हम देखते हैं कि जैसे बचपन में आपने देखा होगा लेबोरेटरी में एक सही तापमान पे एक सही चीज को हम सही मात्रा में डालते हैं तो उसका रिएक्शन जो है वो एक जैसा ही होता है। And if you repeated the experiment with the same, they used to have what they call STP, standard temperature and pressure, 25 degrees Celsius, 1 atmosphere pressure. So if you had the same temperature, the same pressure, you did the same experiment, you'd always get the same result. तो इसे STP कहते हैं कि मतलब एक ही तापमान, एक ही प्रेशर पे यदि आप एक ही रिएक्शन बार बार कराएंगे तो हर बार आपको जो है रिजल्ट सेम मिलेगा, ऐसा नहीं कि रिजल्ट अलग अलग आएगा। But if you got a different result, it meant that some variable was different. यदि अलग परिणाम अलग प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपने जो चीजें उसमें मिलाई हैं, कहीं ना कहीं उनमें अंतर आ गया है। That's science. ये है विज्ञान। And so devotional service is a science. तो भक्ति भी क्या है? विज्ञान है। If you apply yourself in a particular way, you will get a particular result. यदि आप अपने आप को एक विशेष तरीके से इसमें युक्त करेंगे तो आपको विशेष परिणाम प्राप्त होना ही है। So if we apply ourselves to the process of bhakti, as guided by our acharyas, we will get the result of giving up material desires. There's no doubt of this. जिस तरह आचार्यों ने बताया है उस विधि से भक्ति का अनुसरण करेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा ही होगा, भौतिक इच्छाएं कम होंगी होंगी। And Krishna declares this to Arjuna in the 18th chapter of the Gita. कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, भगवद गीता का 18वें अध्याय बताते हैं। He explains to Arjuna that he says, if you always engage in me, think of me, worship me, then you'll come to me without fail. I promise you this because you're my dear friend. बोले यदि आप मेरी सेवा में युक्त होते हो, मेरी पूजा करते हो, तो आप मेरे पास निश्चित रूप से आओगे, कोई संदेह नहीं है, मैं इसका वचन देता हूँ। So he's explaining the science. If you apply yourself in this way, you'll get this result. तो ये विज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि यदि ऐसे विज्ञान में इस तरह युक्त करोगे भक्ति में सेवा में तो ये परिणाम मिलना ही है। Without fail. बिना किसी संशय के कोई समस्या। So we see here Krishna begins by talking about his devotees. तो हम यहाँ देखते हैं कृष्ण शुरुआत करते हैं अपने भक्तों के बारे में बातचीत करते हैं, बताते हैं। We need to understand that these personalities, the Bojis, the Vrishnas, the Andakas, etc., they're not ordinary personalities. हमें समझना होगा कि वृष्णि, बोझ, अंधक ये सब साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। They're all intimate associates of the Lord. ये सब भगवान के अंतरंग पार्षद ही हैं। Eternal associates of the Lord. नित्य पार्षद हैं भगवान। So it means that when Krishna descends to this material world to perform pastimes, to bring the conditioned souls back to Godhead, these associates descend with him. जब कृष्ण इस जगत में प्रकट होते हैं बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए,
उनको भगवतम बुलाने के लिए। तो ये जो पार्षद हैं ये भी साथ में आते हैं कृष्ण लीला में भाग लेने के लिए। In the beginning of the Mahabharata, it describes how all these devatas and intimate associates, they took birth in all these different dynasties and also in Vrindavan and different places in order to assist Krishna in his pastimes. ये भागवत में बताया जब कृष्ण का अवतरण हो रहा है तो उस समय अलग अलग देवताओं ने, अलग अलग ये जो पार्षद हैं, इन्होंने अलग अलग जगह पे जन्म लिया ताकि कृष्ण लीला में हम भी भाग लेंगे। It also describes how personalities like Duryodhana and others, they were actually demoniac persons taking birth to also assist in Krishna's pastimes. साथ ही ये बताया कि दुर्योधन और अलग अलग जो आसुरी हैं, असुर वो भी जन्म लिए अलग अलग जगह, वो उनका भी उद्देश्य यही था कृष्ण लीला में हम भी भाग लेंगे। But obviously they didn't think they were participating in Krishna's pastimes. They just think they were trying to kill God or kill Vishnu. Yeah. They didn't think they were participating in Krishna's pastimes. Their thought was to kill Vishnu. हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसे सोचा नहीं कि हम तो कृष्ण लीला में भाग लेने आए हैं। उनका तो उद्देश्य था कि हमको तो कृष्ण को मारना है या विष्णु को मारना है। But this is the interesting nature of Krishna or the absolute truth. लेकिन कृष्ण का या परम सत्य का ये अद्भुत स्वभाव है is that all contradictory things must be present there, otherwise how can he be the absolute truth? कि उनके अंदर सारी विरोधी तत्व जो है सारे एक साथ उनके अंदर उपस्थित होने चाहिए, वरना वो परम सत्य पूर्ण कैसे होंगे? A few days ago I was in Mayapur and His Holiness Chandramauli Maharaj was giving class. कुछ दिन पहले मैं मायापुर में था, इस समय चंद्रमौली महाराज क्लास दे रहे थे। And he asked an interesting question. He said, why do the jivas exist? उन्होंने एक बहुत ही रुचिकर प्रश्न पूछा कि जीवों का अस्तित्व है ही क्यों, जीव क्यों है इस संसार में? And different senior devotees were giving interesting answers. अलग अलग वरिष्ठ वैष्णव अलग अलग उत्तर दे रहे थे इस प्रश्न का। Some were talking about loving relationship, the exchange of love and things like that. कुछ ने कहा कि प्रेम में संबंधों का आदान प्रदान करने के लिए हैं भगवान के साथ जीव। But what do you think was Maharaja's answer? लेकिन आपका क्या लगता है महाराज का उत्तर क्या था? Anyone know? कोई जानते हैं? Did anyone listen to the class? Krishna wanted to expand his place. Eko Bahusyama. Yeah, that's there, but that's not the answer. You can translate that? Yeah. You can translate that? तो जैसे मैंने उत्तर दिया कि एको बहुश्याम, कृष्ण चाहते थे कि मेरे आनंद की वृद्धि हो तो एक से बहुत जीवों को उत्पन्न किया। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि हाँ ये तो है ही, लेकिन ये उनका उत्तर नहीं था महाराज का। Maharaj quoted from the Madhya Leela. महाराज ने मध्य लीला चैतन्य चरितमृत से बताया। I think it was chapter 6 or 7, text 167. And in there, Prabhupada's explaining, the verse is explaining the absolute truth, the nature of the absolute truth. अध्याय 6 अध्याय 7 में कोई श्लोक है, तो उस श्लोक में भगवान की प्रकृति का वर्णन है। But in the verse, Prabhupada explains that in order for the absolute truth to be complete, that all finite and infinite things must be present. तो ऐसा बताते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि भगवान को यदि पूर्ण होना है तो उनके अंदर सीमित चीजें भी होनी चाहिए, असीमित चीजें भी होनी चाहिए। So infinite living entities obviously are, Vishnu and all those expansions. तो जो अनंत या असीमित जो जीव हैं उसमें तो जैसे विष्णु तत्व हैं वो हैं। But the finite living entities are the jivas. लेकिन जो सीमित हैं जिनकी क्षमता वो हम हैं। Us. Yeah? जीवस मतलब हम लोग हैं। So in order for the infinite, or in order for the absolute truth to be complete, the finite and the infinite living entities need to be there. तो इस प्रकार भगवान यदि पूर्ण है तो उनकी पूर्ण होने के लिए सीमित के रूप में हम हैं और असीमित रूप में विष्णु तत्व हैं, तो इसलिए हमारा प्राकट्य हुआ। So all contradictory things resolve themselves in the Lord. तो जो सारे विरोधी तत्व जो हैं जब भगवान के साथ युक्त होते हैं तो वो सब उनका समाधान हो जाता है। And we see that even though these finite living entities, like these personalities being talked about here, the Boljas, the Vrishnis, the Andikas, the Surasanas, these are all finite living entities. तो हम यहाँ देखते हैं कि बोझ, वृष्णि, अंधक, शूरसेन ये सभी क्या है? सीमित जीव हैं, शुद्र जीव। Even though they're eternal associates of the Lord, they're still finite living entities. हालांकि ये भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन ये विष्णु तत्व नहीं है, जीव तत्व है।
They're jivas just like us, but they're perfected jivas. हमारी तरह जीव ही हैं, लेकिन ये पूर्णता को प्राप्त जीव हैं, उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। They've understood and perfected their relationship with Krishna. उनको समझ में आ गया कृष्ण के साथ क्या संबंध है, और उस संबंध को उन्होंने स्थापित भी कर लिया है। And in that relationship, they're having these perfected, loving exchanges with Krishna. और उस संबंध के माध्यम से कृष्ण के साथ प्रेममय आदान प्रदान करते हैं ये सभी पार्षद। And this is the perfection of the living entity's existence, is to have these exchanges with the Lord. और जीव हम लोग के होने का उद्देश्य यही है कि भगवान के साथ हम प्रेममय आदान प्रदान करें। See, in this material world, we're trying to have these exchanges with each other. देखिए, इस भौतिक जगत में हम ये प्रेममय संबंध हैं, हम चाह रहे हैं, हम आपस में इनका आदान प्रदान करते हैं, But they're not satisfying. लेकिन ये आदान प्रदान करेंगे आपस में, तो इससे हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी, ना सामने वाले को मिलेगी। Because of our conditioned consciousness, because of our material contamination, we're seeing the other living entity as the body, and we're trying to experience relationship or exchange with the body. तो क्योंकि हमारे अंदर भौतिक अनर्थ हैं, तो हम सामने वाले व्यक्ति को एक शरीर के रूप में देखते हैं, और आध्यात्मिक जो संबंध है उसका आदान प्रदान करना चाहते हैं शारीरिक स्तर पे, Which can never satisfy us. जिससे कभी संतुष्टि मिलेगी नहीं। Because the living entity is eternal, the body is temporary. क्योंकि जीव जो है वो नित्य है और शरीर जो है वो तो अनित्य है। When the eternal tries to experience relationship with the temporary, frustration results. जब नित्य जीव अनित्य शरीर के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा, तो उसको जो है निराशा ही हाथ लगेगी। And as long as we're trying to seek happiness in this way, we'll meet with frustration. और जब तक हम इस तरह खुशी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो हम हमेशा निराश रहेंगे। It's only when we seek happiness in the eternal, or seek relationship in the eternal, can we actually become satisfied. हम संतुष्टि तब प्राप्त कर पाएंगे जब नित्य वस्तु के साथ हम युक्त हों, उसके साथ संबंध स्थापित करें। And that relationship must be based on our service to Krishna. और वो जो संबंध है, नित्य संबंध, वो कृष्ण के साथ हमारे संबंध के आधार पर ही होना चाहिए। Because even we see in the 12th chapter of the Gita, that verse Klesha Dikkarastesham Abhyakta Shakti Chaitasam, how Krishna is explaining to Arjuna that to make advancement in the personal path is very troublesome. 12वें अध्याय भगवद गीता के भगवान कृष्ण खुद बताते हैं कि ये जो निराकारवाद का जो मार्ग है, इस पे आगे बढ़ना कितना कठिन है। Because Prabhupada explains that their approach, their engagement is subjective. लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं कि उनके जो भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है वो ठीक नहीं है। They're trying to deal with something which has no ultimate form, which has no ultimate personality. वे किसी ऐसे की पूजा कर रहे हैं जिनका वो रूप ही नहीं मानते हैं, जिनका वो कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। निराकारवादी ऐसे की पूजा करते हैं। But when the devotee engages in relationship with, or engages in serving and engages in relationship with Krishna, he is dealing with the ultimate objective personality. He has existence. He's a fact. और जो भक्त हैं वो कृष्ण का संबंधों का आदान प्रदान करते हैं, जिनका एक व्यक्तित्व है जो कि चरम व्यक्तित्व है और एक उनका स्वरूप है। All throughout the Bhagavatam we're seeing wonderful descriptions of Krishna's pastimes. पूरे भागवत में हम देखते हैं कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन बहुत हुआ है। This is not imagination made up by some devotee. These pastimes are a fact. The form is a fact. तो ये कुछ कल्पना नहीं है, ये जो लीला है भगवान की ये तथ्य हैं, ये जो रूप है भगवान का ये सत्य है। It's not like these temporary forms in this material world. ये इस भौतिक जगत की क्षणिक रूपों की तरह नहीं है भगवान का रूप। And to understand the temporary form, we just look at our material body, we can see how much the body has changed from the point of being born to the point of dying. The body is constantly changing. और भौतिक जगत का स्वभाव हम देखें, हम खुद के शरीर को देखें कि जन्म लेने से लेके अभी तक में शरीर में कितना परिवर्तन आया और मृत्यु तक कितना परिवर्तन आ जाता है। And that's the temporary nature of this material form. और भौतिक जगत के रूपों का यही क्षणिक स्वभाव है। Whereas spiritual forms are eternal. लेकिन आध्यात्मिक रूप जो हैं वो नित्य हैं। And when we engage in relationship with these eternal forms, this is how we find satisfaction in this material world. और जब हम नित्य रूपों के साथ संबंधों में युक्त होते हैं, तो ऐसे हमको संतुष्टि मिल जाती है। And we see here this verse is describing how these devotees are engaging with Krishna.
और यहाँ पे बताया है कि कैसे ये भक्त कृष्ण की सेवा में युक्त हो रहे हैं। And they see Krishna's pleasing smiles. कृष्ण की मधुर मुस्कान को दर्शन करते हैं। Krishna's smile is so enchanting. कृष्ण की जो मुस्कान है ना, मोहित कर देने वाली है। Sometimes we hear about Cupid and how Cupid with his arrows, he's enchanting all these materialistic people. But Krishna, he is so enchanting that he enchants even Cupid. कभी कभी सुनते हैं ना, कामदेव जो है अपने बाणों से कैसे भौतिक जगत के लोगों को मोहित करता है, आकर्षित करता है, लेकिन कृष्ण इतने सुंदर हैं कि वो कामदेवों को भी आकर्षित करते हैं। And so all these devotees, they're seeing Krishna's smiles and they're becoming completely enchanted. तो ये सब कृष्ण की मधुर मुस्कान को देख के सारे भक्त उनसे मोहित हो जाते हैं। And then his affectionate behavior. और फिर उसके बाद उनका कृष्ण का जो स्नेहपूर्ण व्यवहार जो है, You know, the way he was dealing with the residents of Vrindavan. जिस प्रकार कृष्ण वृंदावन के निवासियों के साथ आदान प्रदान करते थे, The Gopas, the Gopis, the cowherd boys, the cowherd girls. गोप गोपियाँ और ग्वाले, Yeah, so affectionate. कितना स्नेह है कृष्ण में। And the affectionate dealings were just, as I was saying before, they're just causing all these devotees to want to be with Krishna, to think of Krishna more, and their love for Krishna was just constantly increasing. तो ये कृष्ण का स्नेहपूर्ण व्यवहार इतना अद्भुत था कि वे भक्त प्रेरित होते थे हमेशा कृष्ण के साथ रहने के लिए, कृष्ण का चिंतन करने के लिए, और इस तरह कृष्ण के प्रति उनका प्रेम हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। And this Vishwanath Chakravarti Thakur, in his comments on some of the pastimes in the 10th canto, he indicates that this is the prime purpose of Krishna's pastimes, is these affectionate dealings to increase the love the devotees have for him. तो चक्रवर्ती पाद ऐसा बताते हैं कि कृष्ण के 10वें स्कंद में जो कृष्ण की लीलाएं हैं, जो प्रेमपूर्ण संबंध है, तो कृष्ण की लीलाओं का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस तरह संबंध भगवान भक्तों के साथ रखें ताकि भक्तों का प्रेम उनके प्रति बढ़ता जाए। And we can see also Krishna's affectionate dealing with the Pandavas. और पांडवों के साथ जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं, वो भी जो आदान प्रदान है, संबंध है, वो भी हम बहुत देखते हैं, बहुत मधुर है। Pandavas were the most powerful warriors in the world. They were the emperors of the world, the rulers of the world. Yet still, they did everything for the pleasure of Krishna. Everything for the pleasure of Krishna. पांडव जो थे बहुत सबसे शूरवीर योद्धा थे इस पृथ्वी पे उस समय, और सारे विश्व के सम्राट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ किया जिससे कृष्ण प्रसन्न हो जाए। Even we see that, Yudhishthira and Bhima, Nakul, Sahadev, Arjuna, all the activities they're doing, they're simply thinking how to please Krishna in these activities. हम देख रहे हैं कि पांचों पांडव जो भी कार्य करते थे वो यही सोचते थे कि इन कार्यों से कृष्ण कैसे खुश होंगे। And whenever they were confronted with any difficulty, what did they do? Whenever they were confronted with any difficulty, what did they do? They were approaching Krishna. No, just translate. Okay. So जब भी पांडवों के सामने कोई समस्या आती थी तो उन्होंने क्या करते थे? They took shelter of Krishna. वो कृष्ण की शरण ग्रहण करते थे। There's the nice verses in the Bhagavatam where Uttara, when she was confronted with this Brahmastra, what did she do? She runs to Krishna. हम देखते हैं भागवतम में ही वर्णन आता है पहले स्कंद में, जब उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया था अश्वत्थामा ने, तो उत्तरा ने क्या किया? कृष्ण की शरण में गई। Pahi pahi mahayogam, she says, save me, she's saying to Krishna. पाही पाही महायोगी, उन्होंने कहा कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। When what's her name? The wife of the Pandavas? Yeah. The wife of the Pandavas, what's her name? Draupadi. Draupadi, when they were trying to disrobe her in the Sabhaya, the Vishnu's assembly, what did she do? She takes shelter of Krishna. तो हम देखते हैं कि पांडवों की जो पत्नी द्रौपदी है, जब दुशासन प्रयास कर रहा था कि उनको नग्न करने का असत सभा में, तब द्रौपदी ने भी कृष्ण की शरण ग्रहण की। When the Pandavas were living in exile in the forest, and Duryodhana, he conspired to cause some mischief, and he sent Durvasa Muni and his 10,000 disciples just after they finished eating. और हम देखते हैं कि जब पांडव वनवास में थे, दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा, दुर्वासा मुनि को उनके पास भेजा शिष्यों के साथ प्रसाद के लिए। उसी समय भेजा जब पांडवों ने अपना प्रसाद अभी खत्म कर दिया था खा के।
just after Draupadi had finished her meal, because we know Draupadi had this mystical pot, whereby as long as she hadn't had not eaten, then she could feed unlimited people. हम जानते हैं कि उस समय द्रौपदी के पास ऐसा एक अक्षय पात्र था जिसमें से जब तक द्रौपदी ने नहीं खाया हो तब तक कितने भी लोग आ जाएं द्रौपदी सबको खिला सकती थी, लेकिन उस समय द्रौपदी ने भी खा लिया, उसके बाद दुर्वासा मुनि आए। And Duryodhana, he knew this. और दुर्योधन ये बात जानते थे अक्षय पात्र वाली। And he was always looking for ways to achieve, to cause problems for the Pandavas, और cause them harm. दुर्योधन हमेशा इसी में लगा रहता था कि कैसे पांडवों की मैं कष्ट दूं, कैसे उनको समस्या में डालूं। That was the joy of his life. If he could actually inflict some pain or some difficulty on the Pandavas, he became very happy. उसके जीवन का यही आनंद था कि पांडवों को यदि कष्ट में डाल दूं तो मुझे खुशी मिलेगी। And so he Durvasa Muni had offered to give him a benediction. He said, I don't need it now, but I'll call on it sometime in the future. तो दुर्वासा मुनि had promised him a benediction sometime before, and so Duryodhana, he called on this benediction. तो कुछ वरदान दिया था पहले और जब आवश्यकता हो तो इसको मांगना। And he asked him to go to the Pandavas after they'd finished eating, and then request them for a meal. और फिर दुर्योधन ने उनसे ये वरदान मांगा कि आप जाइए पांडवों के पास जब उन्होंने खाना खा लिया हो और फिर उनको वहाँ खाना आपको नहीं मिलेगा, उनको शाप दीजिएगा। And they knew the nature of Durvasa Muni, how he's very, very angry, and so they were very, the Pandavas were very concerned that Durvasa was going to curse them. So what did Draupadi do? She took shelter of Krishna. तो हम जानते हैं दुर्वासा मुनि जो है अपने क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, तो फिर वो जब पांडवों के पास गए तो पांडव सब वो हैरान हो गए कि अब हम क्या करें, तो फिर उन्होंने कृष्ण की शरण ली। And we see his instructions. He gave instructions to Arjuna in the Bhagavad Gita, and what was the result of those instructions is Arjuna takes shelter of Krishna. और कृष्ण के उपदेशों की बात करें तो हम देखते हैं कि कृष्ण ने कैसे उपदेश दिए अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से, और उन उपदेशों को माध्यम से क्या हुआ, अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण की। What was Arjuna's final words in the Bhagavad Gita? अर्जुन ने कृष्ण भगवद गीता में उपदेश जो आखिरी शब्द कहे वो क्या कहे? Karashe vachanam tava. करिष्ये वचनम तव। I will do what you say. मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। So he's surrendering to Krishna. इस तरह उन्होंने कृष्ण की शरण ग्रहण की। Uddhava Gita, same thing. Uddhava just surrenders to Krishna. उद्धव गीता में भी यही हमको देखने को मिलता है, उद्धव जो है भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं अंत में। And then so many uncommon activities that Krishna performs. और साथ ही बहुत सारी अलौकिक लीलाएं जो है कृष्ण ने संपादन की हैं, that just simply cause the devotees to surrender to Krishna more and more. They simply deepen the devotees' affection for Krishna. They deepen their love for Krishna. उन लीलाओं के माध्यम से बस कृष्ण के प्रति भक्तों का प्रेम बढ़ता ही चला जाता है और उनके प्रति शरणागति का भाव बढ़ता चला जाता है। So this is the purpose of Krishna's descent, is simply to deepen the devotees' love for him. तो यही है कृष्ण के प्राकट्य का उद्देश्य कि भक्तों के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाना। And this is the purpose of the process of Krishna consciousness. और कृष्ण भाव की विधि का भी यही उद्देश्य है, कैसे कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता ही चला जाए। Is to deepen our attraction and our affection to Krishna. उनके प्रति आकर्षण, उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता चला जाए, गहरा होता चला जाए। Thank you. धन्यवाद। Any questions? किसी कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। My question is in the initial days of one is building Krishna consciousness. So I felt that initially it was very difficult for me to accept to develop so much of faith in the personal form of the Lord. Although I know that Lord has existed personally, so but still seeing the deity is not pictures in face. So we could not relate so much, and I had to again and again recall something philosophy. But now at least so much that type of disturbance does not come. So how Prabhuji that much disturbance has not come. So at least some steps ahead going further by the mercy of the Lord and devotees. So how does this happen, Prabhuji? So that
can help the other devotees also who are starting. Sure. You'll translate? प्रभु जी का प्रश्न है कि भक्ति में जब हम शुरू में आए थे तो भगवान का एक रूप है, इसके ऊपर इतना विश्वास नहीं होता था, लेकिन बार बार अपने आप को फिलोसॉफी के मदद समझाते थे, करते थे। अभी लेकिन इतना विश्वास आ गया है, काफ़ी आगे आ गए हैं कि भगवान का एक रूप है, तो हम कैसे अन्य भक्तों की मदद करें जो नए नए आते हैं कि उनको हम भगवान के रूप में विश्वास दिलाएं। So in Mayapur in 1976, Srila Prabhupada was giving Bhagavatam class. मायापुर में श्रील प्रभुपाद 1976 में भागवतम प्रवचन दे रहे थे। And Prabhupada was just talking about the verse. और प्रभुपाद श्लोक की चर्चा कर रहे थे। And then some devotees got up to leave the class. और कुछ भक्त क्लास छोड़ के जाने लगे। And Srila Prabhupada noticed that they were leaving. और प्रभुपाद जी ने इस पर ध्यान दिया कि वो लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं क्लास से। He said, oh? प्रभुपाद जी ने कहा, Where are they going? कहाँ जा रहे हैं? Some other business? कुछ और भी काम करना है क्या इसके अलावा? Ugra karma. उग्र कर्म करने जा रहे हैं। And then he went on to explain that if we don't have a life of hearing and chanting, then these big buildings will become he says takobari, it'll become a burden. Who will become burden? The big buildings, meaning the temple and that will become a burden. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि हमको श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं है तो ये बड़ी बड़ी इमारतें जो हमने बनाई हैं ना, ये एक बोझ बन के रह जाएंगी। And the deity will become like a stone around the neck. He used the term galagraha. और वो जो विग्रह हैं वो हो जाएगा जैसे गले में पत्थर है, गलग्रह। So this is the point, and Prabhupada also makes the point, he said, why is it that people are not taking to religion? He said this is the fault of the preachers, because they cannot inspire them, they cannot instill this desire to hear and chant. प्रभुपाद जी बोले कि क्यों लोग जो है धर्म को नहीं अपना रहे, ये प्रचारकों की गलती है कि वो उस तरह लोगों के अंदर वो प्रेरणा नहीं दे पा रहे हैं कि श्रवण कीर्तन में लोगों की रुचि बढ़े। So this is the essence of our process, is hearing and chanting, Shravanam Kirtanam. हमारी सारी जो विधि है उसका सार तो यही है, श्रवण कीर्तन करना है। So ourselves, if we can deepen our attraction to hearing and chanting about the pastimes of the Lord, about the qualities of the Lord, about the qualities and the pastimes of the devotees, then the anarthas will be destroyed. They'll be washed away. तो हम यदि खुद की बात करें तो हम अपने अंदर ये गहराई से ये रुचि उत्पन्न करें श्रवण कीर्तन भगवान की लीलाओं के विषय में सुनने की, तो अनर्थ जो हृदय से हैं वो नष्ट होते चले जाएंगे। But if our attraction is to hearing about mundane activities and reading the news and things like that, then these anarthas in the heart will just grow. लेकिन हमारी भौतिक कारक को सुनने में रुचि है, अखबार पढ़ने में रुचि है, तो ये अनर्थ हृदय में जो है ना ये बढ़ते चले जाएंगे। So for us personally, we need to deepen our attraction for hearing about Krishna, for talking about Krishna. तो व्यक्तिगत रूप से मैं तो यही कहूँगा, हमें कृष्ण के बारे में बोलने के लिए और कृष्ण के बारे में सुनने के लिए हमारे आकर्षण को और गहरा करना है और बढ़ाना है। And then for other devotees, we need to inspire them to hear about Krishna and to speak about Krishna. और बाकी भक्तों की बात करें तो उनको भी हमको प्रेरणा देनी है कि आप कृष्ण के बारे में सुनिए और कृष्ण के बारे में चर्चा कीजिए। Shushusho Sharanasya Vasudeva Kataruchi describes the Bhagavatam that this by serving great souls, then great service is done. And by such service one develops an affinity, this Vasudeva Kataruchi, you develop this taste for Vasudeva Kata. And this is what we have to do, is develop this taste. और श्री भगवान बताते हैं शुश्रूषा शब्ददान से कि जो महान आचार्य हैं, महान वैष्णव हैं, भक्त हैं, उनकी सेवा करने से वासुदेव कथा में रुचि उत्पन्न होती है। तो हमें यही करना है, उनकी सेवा करके इस कथा में रुचि को विकसित करना है। Because as I explained before, it's quite unique, this taste, in that one becomes satisfied, becomes satiated, but you're never satisfied. You want more and more. इसमें पहले ही बोल रहा था कि जब कथा में जैसे रुचि आती है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन और भी असंतुष्ट रहते हैं कि और चाहिए और चाहिए। But with material things you're just never satisfied. Full stop. लेकिन भौतिक जीवन में कभी भी संतुष्ट होगा ही नहीं, बिल्कुल, वो तो पूरा ही। There's no satiation of the senses. इंद्रियां कभी भी उसमें संतुष्ट नहीं होंगी। Very different.
Anything else? और कुछ? Thank you very much, Srila Prabhupada ki, Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki, Jai. Jai Nitai Go Premanandi. Hallelujah.